So, parasympathetic nervous system is that type of nervous system in which the neurons, the neuron fibers are coming from the cranium and lumbar region. So, this is craniosacral outflow. Craniosacral outflow. It is also framed as an MCQ question. Okay, here as you can see that कि आपके पास प्री गैंग्लियोनिक neuron length is more than the post ganglionic, but in case of sympathetic we have the post ganglion which is lengthy. Here the preganglion, the length is more. Okay, parasympathetic nervous system is that type of nervous system in which there is rest and digest condition. There is stimulation of flow of saliva. The saliva is produced more and more. The neurons which are coming from the cranium ends into the ganglion, and from that ganglion another neuron arises and give branches to the eye that will help the eye to constrict, right? Now what happens to the heartbeat? It slows down the heart rate. There is constriction of bronchi. There is no need of more and more oxygen. So why we dilate the bronchi? So it must be constricted. There is no fear condition. There is no danger condition. The person is sitting comfortably and he is sitting comfortably and is in rest and digest condition, right? There is no fear. There is no danger. Then there is stimulation of peristalsis and secretion of enzymes, stimulation of release of bile, because bile is important during the digestion. It contracts the bladder. The bladder should contract. The bladder should be in the contracted form. But in case of sympathetic nervous system, there is inhibition in the contraction of bladder and rectum, right? डाइजेशन जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होगी, इसीलिए आपके पास ब्लैडर की कंस्ट्रिक्शन आ रही है, राइट? डाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा है. डाइजेशन आपके पास जितने भी एंजाइम्स डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं, अपनी एक्टिविटी जो है वो फास्ट करेंगे, और ब्लड फ्लो जो है वो आई को जाएगा, जीआईटी को जाएगा, हार्ट को और लंग्स को जाएगा. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है. सो जब आपके पास बॉडी में अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा सिस्टम जो है वो एनी टाइम एक्टिवेटेड रहता है, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक दोनों आपके पास सिस्टम्स मौजूद हैं. पैरासिम्पैथेटिक हर वक्त जो है वो काम कर रहा होगा, लेकिन सिंपैथेटिक आपके पास तभी काम करेगा जब डेंजर है या फियर है. ठीक है, सो आई होप कि दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड देयर इज़ नो अदर थिंग. एंड मैंने आपको वेगस नर्व के बारे में बताया है, मैंने आपको क्रेनियल नर्व्स के बारे में बताया है. तो ये सारी की सारी नर्व्स जो हैं ये अराइज होती हैं, इनकी एक्सटेंशंस पर्टिकुलर ऑर्गन को जाती है. वो हार्ट भी हो सकता है, आई भी हो सकती है, लंग्स भी हो सकते हैं, और वहाँ पर जाकर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ कर लेने के बाद उस ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगी कि आइदर इसको कंस्ट्रिक्ट करना है या डायलेट करना है, आइदर जीआईटी को मोर ज़्यादा से ज़्यादा काम पे लगाना है या नहीं, इसकी सिक्रीशन को स्टॉप करना है. ठीक है. Now the topic is structure and function of special receptors.
In this topic, we will study the detailed structure of the taste receptor, that is gustation, not gas station, that is gustation, gustation. Okay. So the tongue contains many ridges and valleys called papillae. ठीक है? The tongue contains many ridges and valleys called papillae. Now in this structure, as you can see that we have 4 different types of papillae which are present